Hello dear students, how are you all? I'm your English grammar teacher Miss Hifsa. I'm here to discuss a new topic with you people. Do you remember our last topic? Let's first discuss it. We have discussed nouns in our last topic. What we have discussed? Nouns. And what is the definition of noun? Naming words. Naming words are called nouns. Naming words are called nouns. You remember we have discussed that noun can be the name of a person, it can be the name of a place, it can be the name of an animal, or it can be the name of anything, any living or non-living thing. In persons, we have discussed that it can be the name of any person like Ali, Ahmad, Sarah, a policeman. It can be the name of any place like hospital, school, home, etc. It can be the name of any animal like lion, monkey, elephant. It can be the name of anything like car, book, pencil, tree, etc. I have also given you homework in my last lecture. You have done your homework or not? Take out your homework page and here we are discussing your homework and you have to mark it for yourself. Look at the first question. Circle the nouns, 10 of them. I told you that these are 15 words and you have to encircle only nouns in them. Like look at the first word, it's brother. Brother. Is it the name of someone? Are you having your brothers? Okay, it means it is the name of a person. So you have to encircle it because it is a noun. Then we have another word, run. Run is the name of anything or any person? No, it is just an action, so it is not a noun. Then we have cheers. Cheers is the name of a non-living thing on which we sit, so it is also a noun, so encircle it. Then we have flowers. Do you have flowers in your gardens? Yes, so it is also the name of flowers, so encircle it as well because it is also a noun. Then we have the word sit. Sit is the name of anything? No, so it is not a noun, so don't encircle it. Then we have garden. Do you have garden at your home? Garden is the name of a place, so encircle it as well. Then we have piano. Piano is also an instrument on which we play music, so encircle it as well because it is a noun. Then we have green. Green is not the name of anything, so it is not a noun. Then Sarah. Sarah is the name of a girl, so it is also the name of a person. It is also a noun. Encircle it as well. Then we have the word fast. Fast is not the name of anything, so leave it. Then we have the word sad. Sad is also not the name of anything, so leave it as well. Then we have cat. Cat is the name of an animal. Encircle it because it is a noun. Then we have the word pizza. Pizza is also the name of a thing, so encircle it as well. Then we have friend. Friend is a name given to a person. जिस तरह आप लोग के friends होते हैं ना, so encircle it as well. Then we have the word table, on which you eat your dinner, lunch, etc. So table is also the name of a thing. Encircle it as well. So have you marked it for yourself? Tell me how much marks have you got. You can write it in the comment section as well, that how much marks you have gotten this question. The marks would be out of 10. Now look at the next question. Complete the sentences using nouns from above. I have told you people that you have to write different nouns from above, which are given above. So look at the first sentence. This is my dash. This is my dash.
This is my friend. You can write the word friend here because friend is a noun. You can write it here. Her name is dash. So which name is given in above nouns? The word Sarah. Her name is Sarah. So you would write Sarah here. I like to eat dash. What do you like to eat? Pizza. Pizza is given in the nouns above. So you have to write the word pizza here. Then number third sentence is my pet is a dash. My pet is a dash. Which animal is mentioned above? Cat. My pet is a cat. So write the word cat here. I play the dash. I play the dash. So in this sentence, look at the word nouns above. Piano. I play the piano because it's a musical instrument and you can play it. Look at the next sentence. There are 4 dash at our dash. There are 4 dash at our dash. So here we would write there are 4 chairs at our table. There are 4 chairs at our table. So write the word chairs and table here. Then look at the next sentence. The dash smells so good in the dash. The dash smells so good in the dash. Which smells? The flowers. The flowers smell so good in the garden because you know we have different flowers in our gardens. So you would write the flowers smell so good in the garden. Okay, look at the last sentence. Your dash is tall. Your dash is tall. So only the last noun is left there, which is the very first one. Your brother is tall. Your brother is tall. So write the word brother here. Now count your marks and write it here. How many marks you have got out of 10? This was all about your yesterday's homework. Now let's start our new topic. Look at the picture. Have you ever seen these words? She, I, he, we, us. Have you ever used these words? आपने कभी ये वर्ड्स देखे हैं या इनको यूज़ किया है अपने रिटन वर्क में, अपने ओरल वर्क में? Yes, you have used it many time. आप लोगों ने बहुत मर्तबा इन्हें यूज़ किया है. जिस तरह आप लोगों से जब कोई पूछता है कि वेयर इज़ यूर मदर, तो आप लोग कहते हो शी इज़ इन द किचन. तो आप लोगों ने शी वर्ड यूज़ किया. इफ़ समवन आस्क्ड यू कि हाउ ओल्ड आर यू, तो आप लोग कहते हो आई एम 7 years old. So you have used the word I. If someone asks you where is your father, आप लोग कहते हो he is at office. So you have used the word he. So in the same way you uses all these words. तुम लोग ये सारे words अपने daily conversation में use करते हो. इन सारे words को क्या कहते हैं? Do you know it? ग्रामर में इन सारे वर्ड्स को प्रोनाउंस कहते हैं. क्या कहते हैं? प्रोनाउंस. से इट अगेन, प्रोनाउंस. और हमारे आज का टॉपिक क्या है? प्रोनाउंस. हम अपने आज के लेक्चर में प्रोनाउंस डिस्कस करेंगे. नाउ लेट्स डिस्कस व्हाट आर प्रोनाउंस. प्रोनाउंस क्या है? हियर वी हैव इट्स डेफिनेशन. Pronouns take the place of a noun. Pronouns take the place of a noun. As you know about nouns, nouns के बारे में तो आप लोग को सब कुछ पता चल गया है ना. अब हम डिस्कस करेंगे कि प्रोनाउंस क्या होते हैं. प्रोनाउंस टेक द प्लेस ऑफ अ नाउन. ये नाउन से उसकी जगह ले लेते हैं. प्रोनाउन क्या करते हैं? नाउन से उनकी जगह ले लेते हैं. And its definition is, say it again, pronouns take the place of a noun. Pronouns take the place of a noun.
Here we have its examples like the word I am Alina. I am Alina. I read in class 2. I read in class 2. So look at these two sentences. इसमें जो words underline है वो क्या है? The word I. And here the word I mean it is used for Alina. Alina ने अपने लिए यूज किया है ये word. I am Alina. I read in class 2. तो ऊपर जो word Alina गया था वो क्या है हमारे पास? Noun है. Alina is a word noun. तो उसकी जगह हमने नीचे सेंटेंस में क्या यूज किया है? I read in class 2. The word I is for Alina. So I have told you pronoun are words which take the place of a noun. यहाँ पे I ने Alina की जगह ले ली. Now look at this second example. Sarah is my friend. Sarah is my friend. She is a good girl. यहाँ पे जो word she है it is used in place of Sarah. Like हम इस तरह भी कह सकते थे Sarah is my friend. Sarah is a good girl. लेकिन यहाँ पे ये noun फिर repeat होता तो इस वजह से हम noun की जगह क्या लगा लेते हैं? Pronouns लगा लेते हैं. So here the word she is replaced Sarah. यहाँ पे she word ने Sarah को replace किया है. So it is also a pronoun. Look at this example. Hi Nida, you are welcome here. Hi Nida, you are welcome here. कौन सा word highlighted है? The word you. And it replaces Nida. तो यहाँ पे word you हमारे पास क्या है? This is also a pronoun. और इसने कौन से noun को replace किया है? The word Nida. Nida हमारे पास noun है और उसे replace किया है कौन से word ने? You. So it is also a pronoun. Look at this other example. I love my parents. I love my parents. They take care of me. They take care of me. Look at the underlined word they. It is also a pronoun and it is used instead of which noun? Parents. Parents is a noun जिसकी जगह हमारे पास कौन सा pronoun यूज हुआ है next sentence में? The word they. It is a pronoun. Look at this picture. Here we have some other pronouns. I is a pronoun. You is a pronoun. He is the word pronoun. She is the word pronoun. It can be also used for non-living things or animals. It is also a pronoun. We is also a pronoun and the word they is also a pronoun. जब हम सिंगुलर अपने लिए यूज करते हैं तो हम I कहते हैं. जब सामने वाले के लिए जो हमें सुन रहा होता है उसके लिए वर्ड यूज करते हैं तो हम यू यूज करते हैं. जब थर्ड पर्सन प्रोनाउन हो इट मीन्स जब वो बंदा प्रेजेंट ना हो या दूर खड़ा हुआ हो तो हम उसके लिए वर्ड ही यूज करते हैं. शी जब वो गर्ल हो या फीमेल हो और वो हमारे कन्वर्सेशन में शरीक ना हो दूर हो तो हम उसके लिए वर्ड शी यूज करते हैं. इट हम नॉन लिविंग थिंग्स या एनिमल्स के लिए यूज करते हैं. वी हम अपने लिए यूज करते हैं लेकिन जब हम ज्यादा हो. दे हम औरों के लिए यूज करते हैं बट व्हेन दे आर मोर इन नंबर जब वो ज्यादा तादाद में हो. नाउ लेट्स डिस्कस कि हम पीपल के लिए कौन से वर्ड्स यूज करते हैं, कौन से प्रोनाउंस यूज करते हैं. वी यूज दीज प्रोनाउंस फॉर पीपल. एज आई टोल्ड यू जब हम अपने लिए यूज करते हैं वी यूज द वर्ड आई. सो इट इज यूज्ड फॉर persons. We it is also used for person. The word you it is also used for person. ये सारे प्रोनाउंस लोगों के लिए यूज होते हैं. ही भी सिंगुलर मेल के लिए यूज होता है. शी सिंगुलर फीमेल के लिए यूज होता है और दे प्लूरल के लिए यूज होता है. सो ऑल दिस प्रोनाउंस आर यूज्ड फॉर डिफरेंट पीपल. नाउ विच प्रोनाउंस वी यूज फॉर डिफरेंट थिंग्स एंड एनिमल्स. तो जब कोई चीज़ या कोई एनिमल हमारे पास सिंगुलर हो तो हम उसके लिए इट वर्ड यूज़ करते हैं. जब एक चीज़ या एक एनिमल की हम बात करते हैं तो हम वर्ड इट यूज़ करते हैं. बट व्हेन दे आर मोर इन नंबर जब वो प्लूरल हो या नंबर में ज़्यादा हो तो हम वर्ड दे यूज़ करते हैं. विच वर्ड वी यूज़? दे.
and both of them are pronoun. It is also a pronoun and they is also a pronoun. So is it clear to you? What is the definition of pronoun? Pronouns take the place of nouns. Pronouns take the place of nouns. Pronouns क्या करते हैं? Nouns की जगह यूज होते हैं या nouns की जगह ले लेते हैं. Now again take a rough page with a pencil and note down your homework for today. Match the word or group of words on the left with the corresponding pronoun on the right. आप लोग को क्या दिया है? लेफ्ट साइड पे डिफरेंट वर्ड्स दिए हैं. ये सारे हमारे पास क्या हैं? नाउन्स है. जिस तरह यू कैन सी पेट, आई, जोसेफ, एलिसा, ट्रक, केवन एंड मार्टिन. दीज आर ऑल नाउन्स. तो आप लोगों ने क्या करना है? इनके लिए जो जो प्रोनाउंस यूज होते हैं, अगर ये सिंगुलर हो तो सिंगुलर प्रोनाउन एज आई हैव डिस्कस्ड. अगर ये नॉन लिविंग थिंग हो तो नॉन लिविंग थिंग के साथ हम कौन सा प्रोनाउन यूज करते हैं? यू हैव टू मैच दीज. ये जिस तरह आप लोग मैच द कॉलम करते हो, इस तरह से ये नाउन्स इनके प्रोनाउंस के साथ आप लोगों ने मैच करना है. एंड इन माई नेक्स्ट लेक्चर आई विल टेल यू अबाउट दिस होमवर्क. इस होमवर्क के कीज हम डिस्कस करेंगे. आंसर कीज मैं आप लोग को बताऊंगी और फिर आप उसी तरह ही मार्क करोगे जिस तरह अभी मार्क किए हैं. होप दिस पार्ट ऑफ स्पीच प्रोनाउन वुड बी क्लियर टू यू पीपल. Thank you for watching. Have a nice day.